Hey everyone, welcome to another travel video. So it's a fine rainy day in August and me and my family have decided to go for a road trip. A road trip to Mahabaleshwar and Panchgani. So we started our journey around 6 in the morning and we are now in the car witnessing amazing views, and driving on such highways is a treat. Mahabaleshwar or Panchgani is around 250 kilometers from Mumbai, which takes around 4.5 hours to reach. So after driving for around 120 kilometers, we have now stopped by to have breakfast near Somatane Fata. And we had mast garma garam puri bhaji. Okay, so this is our first stop. No, sorry, first stop नहीं, काफ़ी stop लिया हमने, काफ़ी बार ऐसा रुका already. So this view is just amazing. So we thought of taking pictures. So हम लोग रुके अचानक. Really beautiful यार, काफ़ी अच्छा लगा. Mahabaleshwar is a popular hill station which is close to Pune and Mumbai, and it's known for its juicy strawberries, numerous lakes and waterfalls, majestic peaks, lush green forests, ancient temples and breathtaking valley views. Traveling to Mahabaleshwar by road is one of the most scenic routes one can take while driving around in the densely forested Western Ghats of India. Our first destination was initially to go to Mapro Gardens, which is in Panchgani, but on the way we came across Mapro Food Park, which is in a place called Vai. So we decided to stop by as it's around 25 kilometers away from Mapro Gardens in Panchgani. What's up? What's up? क्या चाहिए? फोटो? So here we have to scan and place our orders, and we have ordered chocolate cream with ice cream. So inside this food park, there's a Mapro factory, and you can also find like a Mapro shopping area where you can find all Mapro products manufactured at the same place and distributed everywhere. It can't be cheaper anywhere else in India too, since we are standing right where they produce it. So when there's a library cafe as well right next to the shopping area, and such a pleasant view here. And small plants, the area is covered with trees. Good, yeah. The overall Mapro Food Park is, काफी अच्छा लग रहा है. So guys, this is the sherbet dispenser, for tasting purpose. So लेने से पहले you can taste it as well. रेड बटन रेड कैसा है? अच्छा है. साला पूरा खत्म कर दिया. मैंने क्या को लेने बोला था, मेरे को तो दिया ही नहीं, खुद पी के खत्म कर दिया. So I will share some history about this place जो मैंने Google पे सर्च किया था. So sharing it with you guys just to save your time.
So originally strawberry is not native to this place. In fact, it only started growing there when the British introduced it in 1920. So Mapro was founded in the year 1959, and the company had its humble beginnings in the hill town of Panchgani, which is near Mahabaleshwar, when a businessman named Kishore Vora, a pharmacist by profession, decided to make some strawberry jam. Then he went on to develop innovative products such as jelly sweets, fish, fruit cubes with fruit juices, and rose syrups, and etc., all for the first time in this country. So when Mapro started making jam from strawberries, they used only a kerosene stove, some domestic utensils, and a thermometer. And Mr. and Mrs. Vora started the journey from their kitchen with the capital of just rupees 800. Yeah, so that's how they started their first journey of Mapro, and then later they took permission from the FDA, that is the Food and Drug Administration, and they started their first ever Mapro food park. So here we are, guys, such a beautiful place. और यहाँ पे सलमान मम्मी को सिखा रहा है कि फ़ोटो कैसा खींचना है, बिकॉज मेरा और सलमान का अच्छा फ़ोटो चाहिए। खुद तो टिक से निकालते नहीं, तो मम्मी को सिखा रहा है। अबे आजा आजा, बस बस हो जाएगा, खींच लेगा अच्छा खासा। Then we continued our journey and we stopped by at Mapro Gardens in Panchgani, which is quite popular and which is a must visit place. Both Mapro Gardens and Mapro Food Park is a beautiful place to click photos, and we clicked a lot of them. अंदर डाल सकता तू? हाँ? छोटा दिखने रहने का। इन बहुत अच्छा दिख रहा है। वैसे तो मैप्रो गार्डन इज क्वाइट पॉपुलर, एंड यहाँ पे people do visit this place whenever they come to Panchgani, and actually काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। You get to see such beautiful and well maintained garden, and अभी फ़िलहाल काफ़ी ठंडी भी है यहाँ पे। ओके, सो काफ़ी अच्छा गार्डन है। अभी हम लोग निकल रहे हैं बिकॉज बारिश बहुत आ रहा है और बारिश काफ़ी ठंडा भी है। लिया हिंदुआ? हाँ वो लिया नहीं, छोड़ अभी बारिश आ रहा है। ओए बारिश आ रहा है और उसके ऊपर से ठंडा है यार। मेरे को लगा ना इतना ठंडा रहेगा, मस्त एकदम अच्छा, एकदम प्लेजेंट, एकदम चिल्ड एकदम। वैसे यहाँ पे क्या बना रहा है आइडिया नहीं, क्या बना रहा है? सैंडविच और पिज़्ज़ा। And here too you will find a shopping area, and they are kind enough to let you taste most of the products before buying them. And I also bought plenty of Mapro products back home, so make sure you don't miss out on the same. मस्त बारिश हो रहा और वो भी एकदम ठंडा।
नहीं यार। मैंने उसका लाइट Then we left Mapro Gardens and decided to have lunch from a restaurant named The Royal Darbar. The ambience and the view from this place are amazing. यहाँ का बाहर का फॉग कैसा लगा? हर 2 मिनट में चेंज होते रहता है बीच में। नाउ इफ यू कैन एकदम गिरगिट जैसा है। हाँ एकदम, अब एकदम क्लियर है, अभी सब प्रॉपरली दिख रहा है। 2 मिनट में 2 मिनट में फुल फॉग और बाद में अचानक गायब। अचानक आता है, अचानक गायब हो जाता है। क्या ये? हाँ। After having lunch around 4 p.m., which is quite late, we then finally decided to go to our hotel, which we had booked in advance. Okay, so अभी while going to a hotel, on the way हम लोग को एक शॉप दिखा जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो क्ले पॉट का रहता है, जो मिट्टी से बनता है. So we thought of stopping by and looking for मीन चट्टी, जो I don't know उसको हिंदी में क्या बोलता है, but mom wanted a मीन चट्टी, so that's why we thought of stopping by this shop, जहाँ पे काफ़ी अच्छा बहुत सारी चीज़ें है यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में था पूरा. सो दैट्स द रीज़न वी डिडंट बाय एनीथिंग. बट एनीवेज, इफ यू कम टू महाबलेश्वर और पंचगनी, ऐसा जो क्ले पॉट्स का जो शॉप है वहाँ पे प्लीज़ डू विजिट. काफ़ी अच्छा देखने मिलता है. सो अगेन वी हैव स्टॉप बाय दिस प्लेस बिकॉज काफ़ी लोग यहाँ पे रुके थे, तो हम लोग सोचा कि सब रुके तो हम लोग भी रुक ही लेते हैं, देखते क्या है करके. वाओ. सो यस, वी आर नॉट रिग्रेटिंग अ डिसीजन. अच्छा हुआ ऐसे हम लोग यहाँ पे रुक गए. बाय द वे, वी हैवंट येट चेक्ड इन टू अ होटल, सो अभी जाके करना है. एनीवेज, वी आर जस्ट एंजॉइंग दिस व्यू एंड इफ़ ऑल वांट, तुम लोग ऐसे भुट्टा एंड ऑल भी खा सकते हैं. वहाँ पे एक वाटरफॉल है, तो शायद नहीं दिख रहा कैमरा पे. यहाँ पे कैसा है ना कि हर 2 मिनट में फॉग आ रहा है जा रहा है ऐसा है. लाइक अभी अगर हम लोग देखेगा तो यहाँ पे इतना फॉग नहीं, लेकिन है थोड़ा बहुत फॉग दिख रहा है. सडनली आफ्टर 2 मिनट्स विल बी लाइक फुल फॉगी, लाइक बिल्कुल नहीं दिखेगा. उसका अगला 2 मिनट में लाइक लिटरली सब क्लियर हो जाएगा. So after few more minutes of driving on the beautiful scenic roads of Panchgani, we are now finally reaching Hotel Malas, which we had booked earlier. It's a beautiful property which I will show you in the second part of the video. We are going to explore a lot of places the next day, so stay tuned for the next video.